Hi you guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing really great and you all are safe at your homes. So as you have already read from the title, this video is about everyday non-detectable nude makeup. So this is what I've achieved and I love this so much. Every time I have to go out थोड़ा सा ज़्यादा presentable लगने का ला, लेकिन no, I don't want that much on my face, लेकिन I want something on my face. I do this kind of look. सो दिस इज़ अ नॉन डिटेक्टेबल मेकअप लुक. इसका मतलब ये है कि जो आपकी स्किन है वो स्किन लाइक लगेगी एंड इट्स नॉट लाइक आपने बहुत ब्रॉन्जर, ब्लश, कंटूर, आईज एंड सब कुछ किया. इट्स लाइक वेरी न्यूड मेकअप. यू कैन सी इट्स लाइक नो मेरी स्किन लग रही है जस्ट हल्का हल्का यहाँ पे कुछ आपको स्पॉट्स दिख रहे होंगे एंड और समथिंग लाइक दैट. बट या दैट इज़ नॉर्मल. आई टोटली लव दिस लुक एंड ये मैं बहुत करती हूँ एंड दिस इज़ माई फेवरेट लुक जब मैंने किसी की नो पार्टी में जाना है एंड कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है. नॉट ओवर द टॉप बट नॉट टू लेस कि मैं कुछ लगूँ ही ना. सो दिस इज़ वॉट आई डू एंड दिस इज़ लाइक 100% forever makeup. मेरा ये go to nude makeup look है. So yes, so before starting please do not forget to subscribe to this channel because I have a goal to reach 2000 subscribers before my birthday, that is on 27 August. So I have like a month and a half. So yeah, I really wanted to achieve that milestone before my birthday so that I have two celebrations to make. And also follow me on my Instagram ID. I will link it down here and in the description box. I'm very active there. मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली थी but yeah, now I'm back on track. Now without any further time, let's get into the video. 1, 2, 3, funk it. हाय यू गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द मेकअप. और सबसे पहले हम अपने बाल पीछे करेंगे बिकॉज थोड़ा सा स्टाइल तो मारना ही है. एंड उसके बाद आई एम यूजिंग दिस बायोटिक मॉइस्चराइजर एंड दिस इज़ द बेस्ट मॉइस्चराइजर इफ़ यू हैव ड्राई एक्ने प्रोन स्किन और ड्राई और कॉम्बिनेशन. इट इज़ suitable for all skin types, or you can use any moisturizer that suit your skin. This is the glow that it gave me, guys. It is so good. So this was my first step. Just push the product into your skin. And the second thing that we are going to use the sunscreen, and I'm using very less sunscreen here because I'm filming at night, and just to show you guys कि sunscreen is important, that is why I'm using it, but you have to use it a lot of sunscreen. So the next is the foundation, and I love this foundation so much. I'm only taking a one pump, that is one layer of this foundation on my skin, and this foundation looks like a second skin. This is so good and this is my exact shade, you guys, and oh my god, I cannot tell you how much I love this. So the key here is blending. जितना आप अच्छी तरीके से अपनी फाउंडेशन, अपने प्रोडक्ट्स को ब्लेंड करेंगे उतनी ज़्यादा फिनिश अच्छी आएगी आपके प्रोडक्ट्स की. आपकी स्किन उतनी ज़्यादा ही नेचुरल लगेगी. सो सी, this is the glow, this is the finish that the blending and the one layer of foundation gave me. So I'll stick to the only one layer because हम जो डार्क पिगमेंटेशन और कंसीलिंग वगैरह है वो हम इस कंसीलर से कर लेंगे. एंड द वन आई एम यूजिंग इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी इन द शेड 04. आई एम वेरी इनसिक्योर अबाउट माई डार्क सर्कल्स, तो मैं उसको तो कवर करती हूँ. कई बार मैं फाउंडेशन भी स्किप कर देती हूँ बट कंसीलर मैं कभी भी नहीं स्किप करती हूँ. आई लव यूजिंग इट. एंड आप कंसीलर जो है वो सारे अपने फेस के स्प्रेड कर दो हल्का हल्का. सी, दिस गिव्स अ इवन टोन. सो जो आप कंसीलर लगाओगे वो सारे फेस पे आप हल्का हल्का नीचे ले जाओ, स्प्रेड कर जाओ, सो दैट नो एवरीथिंग लुक्स इवन. So I have intense dark circle, that is why I'm using a orange concealer over it, and no, I have to use it first the orange one and then the second concealer. But no, makeup has no rules, you guys. आपको जिस चीज़ में कंफर्टेबल लगता है, आपको जैसे लगता है कि आपके लिए वो टेक्निक ठीक जा रही है, आप वो यूज़ करो. बिकॉज एवरी वन हैज़ देयर ओन डिफरेंट टेक्निक्स उनको सूट करती है. तो मैं कई बार ऐसे कर लेती हूँ, कई बार मैं ऑरेंज करेक्टर पहले लगा लेती हूँ. So this is the finish of after the foundation and the concealer, and guys trust me, this looks so good in real life also. सिर्फ कैमरा पे नहीं, जितनी अच्छी आप ब्लेंडिंग करोगे उतना अच्छा आपका फिनिश आएगा.
So the third thing I'm using here is a baking powder from the Maybelline brand because I believe that baking powder आपके जो कंसील के जो फाइन लाइंस आ जाते हैं या वो कंसील जो क्रीज हो जाता है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको सारे दिन के लिए सेट करके रखता है रादर दैन यूजिंग अ कॉम्पैक्ट. अगर आप 2-3 घंटे के लिए बाहर जा रहे हो तो इट्स ओके, या दिस इज़ क्लमजी मी, बट उसके लिए आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर लो. बट अगर आपने सारा दिन वो मेकअप रखना है एंड यू डोंट वांट एनीथिंग कि जो अपनी प्लेस से हटे, तो यूज़ अ बेकिंग पाउडर एंड हल्का सा जो ब्रश पे रह जाएगा वो अपने सारे फेस पे स्प्रेड कर दो. So the next is eyebrows, and eyebrows is the second most important part for me after my concealing. So I really take time to do my eyebrows because मेरे को क्या फ़ील होता है कि अगर आप eyebrows बहुत अच्छे तरीके से बनाओगे अकॉर्डिंग टू योर फेस, वो आपकी लुक 10 टाइम्स ज़्यादा अच्छे तरीके से बाहर लेके आएगा रैदर देन कि आपने उसको आईब्रोज वैसे ही छोड़ दिए एंड बाकी सारा मेकअप कर लिया है. सो यू विल सी द डिफरेंस कि मेरा फेस पहले क्या लग रहा था एंड आफ्टर डूइंग माई ब्राउज कैसा लगेगा. एंड ऑन सम डेज़ वैन आई फील कि मेरे को अपने ब्राउज सारा दिन लॉन्ग चाहिए, आई यूज़ अ ब्राउ जेल एंड दिस इज़ फ्रॉम एल्फ एंड दिस इज़ सो गुड यू गाइस. ये बहुत अच्छी है एंड ये मेरी ब्राउज सारे दिन के लिए उसी प्लेस में रखती है जैसे थी until I wash them off. So yeah, you have to give it a try. So yeah, this is the look after doing my brows. So this is the blush from the Stay Quirky, and trust me guys, I think this is the shade apricot or something. I will write it down here. So what will I do is I will use this as an eyeshadow, as a contour and blush 3 in 1 thingy, because this is a nude makeup look and हमने इतने कलर्स नहीं लेके आने अपने फेस पे, जस्ट अपने फेस को प्रेजेंटेबल दिखाना, दैट इट इज़ लुकिंग नेचुरल. So I'll be using that as an eyeshadow. And the next is I'm really into the foxy eyeliner as these days. So मैं वो करूँगी आज. So sometimes I skip this step and only use the mascara. So this is up to you, आपने अपने eyes को कैसे दिखाना है. I really like to show them थोड़ी लंबी eyes. So मैं inner corner भी कर लेती हूँ. So वो मेरी eyes बहुत लंबी लगती है. एंड उसके बाद ऑब्वियसली द मस्कारा, आई कैन नॉट लिव विदाउट मस्कारा. सो व्हाट आई डू इज़ जो मस्कारा है ना, मैं वो अपने आउटर लैशेज़ पे ज़्यादा फोकस करती हूँ रैदर दैन जो अंदर वाली लैशेज़ होती हैं. सो इससे क्या होता है कि जो बाहर वाली लैशेज़ है ना, वो जो आपकी आई की शेप बहुत अच्छी तरीके से आती है. इट्स लाइक आलमंड शेप आ जाती है. सो नीचे वाले लैशेज़ पे भी मैं सिर्फ बाहर वाले पे ही फोकस करती हूँ रैदर दैन फोकसिंग इनवर्ड. सो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, आप भी ट्राई करके देखना. योर आइज विल लुक very cute. So yeah, this is me doing my mascara and making the weird faces like we all do. So the next step that I am going to use is the same using blush and from Stay Quirky, and वही ब्लश यूज़ करके मैंने अपना वो बिग फ्लफ़ी ब्रश ले लेना है एंड कलर उठा के वही कॉन्टोर एंड ब्लश टाइप पे लगा देना है. वाई वी आर यूजिंग दिस लाइट और एप्रिकॉट शेड इज़ बिकॉज हमने बहुत ज़्यादा पिंक नहीं करनी है अपनी चीक्स, जस्ट टू गिव इट अ हिंट ऑफ कलर कि हल्का सा हमारा कलर आ जाए फेस पे, बिल्कुल ही ब्लैक ना लगे हम. दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग इट एज अ कॉन्टोर एंड एज ब्रॉन्जर एंड एज अ ब्लश. सो यू विल सी इट विल लुक सो गुड. एंड जो रह गया है वो अपने जॉ लाइन पे मैं कर देती हूँ. सो द नेक्स्ट इज आई एम यूजिंग इज लिप लाइनर. आई थिंक इट इज़ फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड और या in the shade chestnut, and this is the one lip liner in the brown that you have to keep it in your kit because ये बहुत अच्छा है and this is very new guys. So I like to do my lip liner. कई बार मैं कर लेती हूँ, कई दिन मैं स्किप भी कर देती. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट मैं थोड़े सिर्फ लिप लाइनर के साथ आउटर वाली चीज़ लिप फिल करती हूँ एंड जो सेंटर वाला पार्ट है मेरे लिप्स का वो मैं लाइटर शेड से फिल कर देती हूँ. आई एम यूजिंग इट्स फ्रॉम कलर बार. आई थिंक इट्स इन द स्टेज 104 गो ऑन स्टेज. दिस इज़ अ वेरी गुड orangish color. So the last step is using a makeup setting spray. This is from MAC. You can use any setting spray you have. Swiss Beauty is also a good one. And yeah, this is our final look. I hope you liked it. So that's it for today's video guys. I hope that you really like this video, and if you did, please do not forget to like, subscribe and share to this channel because my goal is to reach 2000 subscribers before my birthday, that is on 27 August. So मेरा बहुत ज़्यादा ये गोल है कि मैं तब तक अपने 2000 subscribers कर लूँ. So yeah, don't forget to subscribe to this channel if you love this video. So I am signing off, and until then I will see you in my next video. Bye bye.